Good morning, class 9th. Today I discuss about the atomic size of atoms. Atoms are very small, so they are not easily seen by microscopic. Atomic size we can know by the help of atomic radius. Atomic radius is measured in unit nanometer. 1 nanometer is equal to 10 to the power minus 9 meter. Hydrogen is the smallest atom and its size is 0.037 into 10 to the power minus 9 meter. Symbol of element or atom. In starting time, we know very few atoms. After discovery of many atoms, we have need to use of atomic symbol. First, Dalton give concept of atomic symbol, but it is not suitable. Example: hydrogen, circle and dot given inside. Oxygen is an empty circle. J.J. Berzelius was given atomic symbol concept and it is accepted by all and even IUPAC. In this concept, we use first letter of English or Latin name of atom. It is written in capital letter. Example: carbon C, hydrogen H. Some atoms have same letter first, then we use two letter as a symbol, first letter in capital and second letter in small letter. Example: chlorine Cl, iron Fe. Now discuss and in symbol we also use some Latin name like the potassium K for calcium and sodium Na for natrium. Now we discuss about the atomic mass. Atomic mass is the fundamental property of atom. Atomic microscopic, so it is very difficult to calculate atomic mass of individual atom. If we anyway calculate atomic mass, then it is very difficult to use due to a smaller value. Hydrogen absolute atomic mass 1.63 into 10 to the power 24 gram. Carbon 1.9926 into 10 to the power minus 23 gram. Now we can find atomic mass of atom by comparing atomic mass with other atom. First we choose hydrogen, but nowadays we use carbon as a standard atom. C12 atom has 6 proton and 6 neutron in nucleus, so it has mass number 12. C12 atom has been fixed an atomic mass of exactly 12 atomic mass in it. 1 atomic mass unit is equal to 1 by 12th mass of carbon atom. 1 carbon atom mass is divided by 12. It gives the 1.605 in 10 to the power minus 24 gram. This is called the 1 atomic mass unit और and carbon 1 atom mass ये दिया गया है, ये इसका atomic mass unit आया है. Now we use U as a unit of atomic mass in place of AMU. U is equal to unified mass. तो हम लोग कैसे अदर एटम का मास निकालते हैं. मास ऑफ हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का मास दिया गया है और एक एमयू का मास डिवाइड करते हैं तो 1.008 जो कि इसको 1 एमयू लिखते हैं. ऑक्सीजन का मास देखो कैसे निकालते हैं लोग हैं. एक ऑक्सीजन एटम का मास ये आया है, उसको एमयू से डिवाइड किया तो आपका 1.599 इंटू 10 मल्टीप्लाई किया तो 1.599 दैट मीन्स 16 हो जाता है. एक होता है एवरेज एटॉमिक मास होता है. वी मेनली यूज एवरेज एटॉमिक मास बिकॉज एटम्स आर फाउंड इन आइसोटोप्स फॉर्म. कार्बन एटॉमिक मास इज इक्वल टू सी. कार्बन का 3 आइसोटोप्स है, C12, C13, C14. C12 98% है, C13 1.1% है और C12 जो है 2 into 10 to the power minus 10% है. तो इसका हम लोग एवरेज एटॉमिक मास निकालते कैसे हैं. तो मतलब 9 ये आपका है ना, इसका 98.8% इसको हमने परसेंटेज निकाला है. 0.988 इंटू 12 प्लस इसका परसेंटेज हो जाएगा 0.01108 इंटू 13 और इसका परसेंटेज जो है 14 का 2 इंटू इतना है तो 2 इंटू 10 पावर माइनस 12 इंटू 14 सबको गुना भाग किया, ऐड किया है 12.011 यू है जिसको हम लोग 12 यू लिखते हैं. ठीक है ना. और मेनली हम लोग मतलब एटॉमिक मास में एवरेज एटॉमिक मास का ही यूज़ करते हैं. ठीक है ना. थैंक यू.